It's a great honor for me to be with all of you on this holy day of Friday, Juma. And yes, we will say a few words about the significance of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is coming next week. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So I will say a few words on a very famous verse by Srila Rupa Goswami, which Srila Krishnadas Kaviraj Goswami places as one of the verses of Mangala Charana of Sri Chaitanya Charitamrita. This verse is explaining the external reasons of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And, oh, okay, I have to pause, I'm sorry. तो महाराज पहले धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा सम्मान और गौरव की बात है कि आप लोगों ने आज शुक्रवार के पवित्र दिन पर महाराज को यहाँ कथा करने के लिए आमंत्रित किया। तो महाराज कह रहे हैं वो कुछ शब्द कहेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में जो अगले सप्ताह आ रहा है। तो महाराज शुरू करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक से जो श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इसे चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में रखते हैं। और ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के बाहरी कारण है जो हमारे बीच प्रकट होने के लिए उसका वर्णन करता है। Anarpita charim chirat karuna avatirna kalu samarpaitam unatojvala rasam svabhakti shriyam harih purata sundara dyuti kadamba sandipita harih hridaya kandare spuratu vah sachinandana. So this verse was glorified by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself and especially all of his associates when Srila Rupa Goswami, being shy as he is, was forced to recite this verse in Siddha Bakul, in a place where Srila Rupa Goswami and Thakur Haridas were living at that time in Jagannath Puri. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस श्लोक का स्वयं गुणगान किया है जब उनके सहयोगियों ने भी जब श्री रूप गोस्वामी इसे कह रहे थे सिद्ध बकुल में जहां पर वे हरिदास ठाकुर के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। Srila Rupa Goswami is glorifying Sri Chaitanya Mahaprabhu by saying Anarpita Charim Chirat, for a long time something which was not given by anyone, Anarpita Charim Chirat, Karuna Avatirna Kalo. You came to this age of Kali because of your own mercy. तो श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं अनार्पितो चरिम चिरात कि बहुत लंबे समय तक जो किसी ने नहीं दिया वे आप देने आए हैं यहाँ पर इस कलयुग में। Srila Jiva Goswami has written a very elaborate commentary on this verse, very long and elaborate commentary on this verse. And I will touch a little bit of this commentary where he explains the similes and different subtle points of Chaitanya Mahaprabhu's appearance in this world. गोस्वामी ने इस श्लोक पर बहुत ही विस्तृत गहराई में टिप्पणी और टीका दी है। आज मैं इस टीका को आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां वो समानताएं और अंतर बताते हैं सूक्ष्म कारणों के जो चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में प्रकट हुए।
First of all, he's explaining why Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared in Navadvip and what is the meaning of Navadvip. सबसे पहले वो व्याख्या कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों नवद्वीप में उनका आविर्भाव हुआ और नवद्वीप का अर्थ क्या है. He says that Navadvip means 9 islands, and each island of Navadvip is the symbolic representation of one of the processes of devotional service. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि नवद्वीप का अर्थ है 9 द्वीप, और इन 9 द्वीपों में से प्रत्येक द्वीप एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो भक्ति के 9 अंगों का. He says that these 9 islands are in the ocean of Prema. These 9 islands of Navadvip are floating in the ocean of Prema. तो ये जो 9 द्वीप है नवद्वीप के, ये प्रेम के सागर में तैर रहे हैं. And they maintain the ocean of Prema. They support the ocean of Prema by their very existence. और जो प्रेम का सागर है, वे इसे बनाए रखते हैं, इसके सहयोग करते हैं अपने अस्तित्व से. And because the purpose of Sri Chaitanya Mahaprabhu of coming to this world in Kali-yuga is to give Prema, he comes to Navadvip to explain that the only way to achieve Prema is to be engaged in these 9 processes of devotional service in a very systematic way. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने का कारण है, कलयुग में आने का कारण है ये प्रेम प्रदान करना, इसलिए वे नवद्वीप में आते हैं इस बात को समझाने के लिए कि इस प्रेम प्राप्ति का एकमात्र तरीका है इस नवविधा भक्ति के नव अंगों में, नव प्रक्रियाओं में लगे रहना एक व्यवस्थित तरीके से. Srila Prabhupada often used to say that bhakti is a science. It's not just a religion. It's a very scientific process. And by appearing in Navadvip, Sri Chaitanya Mahaprabhu is showing us that to achieve the goal of Prema, love of God, we have to be constantly engaged in one of the processes of devotional service in a systematic manner. शिला प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि भक्ति एक विज्ञान है, केवल ये धर्म पे आधारित नहीं है, इसके साथ साथ एक विज्ञान भी है. और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में स्वयं प्रकट होते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि प्रेम का लक्ष्य पाने के लिए हमें लगातार इस नव अंग भक्ति के कम से कम एक अंग में जुड़े रहना होगा. So that's the first point which Srila Jiva Goswami is making by explaining this verse. And then he starts explaining 10 different reasons of Chaitanya Mahaprabhu's appearance, 10 different aspects of his appearance in this world in Kali-yuga. तो ये पहला विषय है जो जीव गोस्वामी समझाते हैं इस श्लोक के विषय में, और फिर वो आगे समझाने जाते हैं 10 कारण जिसके वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु, 10 पहलू जिसके वजह से वो इस जगत में कलयुग में प्रकट हुए. So let's analyze this and try to understand how it is very relevant to our existence and to our practice of devotional service. One after another, these reasons of Chaitanya Mahaprabhu's appearance in this world. तो आइए हम सब मिलके विश्लेषण करते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये हमारे अस्तित्व में लागू होता है. ये 10 कारण हमारे भक्ति के अभ्यास में कैसे लागू होते हैं, ये 10 कारण एक के बाद एक हम देखते हैं जिसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए. He's basically explaining this verse, Anarpita Charit Chiram, what Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving, which was not given before by anyone during this day of Brahma.
चरित चिराम के जो कुछ पहले कभी दिया नहीं गया था इस ब्रह्मा के एक दिन में, वो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं. The first reason or the first gift of Lord Chaitanya is Atyanta Agati Gati Danaya, to award something which is unattainable. Agati Gati. Gati means goal. Agati, the goal which you cannot really achieve. Atyanta Agati, in the extreme extent, unattainable goal, he is just giving to us. पहली भेंट, पहला उपहार जो चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं, वो यहाँ पे के वो वस्तु हमें दे रहे हैं जो अत्यंत रूप से अप्राप्य है. अतिगति, अत्यंत गति, तो ये हमें Atyanta Agati Gati Danaya, to give. अत्यंत अगति गति धनाय. Yeah. So basically, what does it mean? It means that we all have some goals. And usually we have very meager goals. Somebody wants to have some money, somebody wants to have wife, somebody wants to have a job in Shyama Desh or in Mathura Desh or in some, some nice place, or somebody have very agati-gati to go to America and become a doctor in America. So people, they have different goals, but these goals are actually very insignificant. And they waste the time of their life in trying to achieve these goals. तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ जीवन में लक्ष्य होते हैं. आम तौर पे ये बहुत ही अल्प लक्ष्य होते हैं. किसी को कुछ धन चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए शाम देश में या मथुरा देश में या कोई और अच्छे स्थान पर, किसी को अगति गति चाहिए, अमेरिका में उसे चिकित्सक बनना है. तो व्यक्तियों को अन्य प्रकार के लक्ष्य हैं, परंतु ये बहुत तुच्छ हैं, और ये प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम केवल अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं. So Sri Chaitanya Mahaprabhu comes and he all of a sudden gives this amazing goal and makes this goal achievable, and everyone becomes inspired about this goal. We can see people in the places where they never heard about Krishna, all of a sudden they are dreaming about achieving this goal of loving Krishna, even though they never heard about Krishna before. But all of a sudden this goal becomes relevant, becomes very bright in their life. कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच आते हैं और अचानक वे ये बहुत अद्भुत लक्ष्य सभी को दे रहे हैं. और ये लक्ष्य, हरे कृष्णा, I think someone has to be muted. हरे कृष्णा. Mute कीजिए. It's excitement about the agati gati, unattainable goal. तो हम देखते हैं, महाराज बता रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच आते हैं और अचानक से हमें वो लक्ष्य प्रदान करते हैं, अद्भुत लक्ष्य, और केवल उसे प्रदान नहीं करते, उस लक्ष्य को प्राप्य भी बनाते हैं. और कैसे व्यक्ति प्रेरित होने लगते हैं जिन्होंने कभी कृष्ण के बारे में सुना भी नहीं था, वे भी कृष्ण प्रेम पाने के लक्ष्य का स्वप्न देखने लगते हैं, और ये लक्ष्य उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कितना उज्जवल हो जाता है. Srila Prabhupada says in Bhagavad Gita that if you set the goal, you will be able to achieve it. And it's a very important principle. If you see the goal, you will be able to achieve it. But unfortunately, people don't see the real goal of their life. And Chaitanya Mahaprabhu comes in Kali-yuga and says, these other goals which you have are useless, tucha. They are insignificant. This is the goal, and if you achieve this goal, every other goal is included into this goal.
प्रभुपाद जी भगवत गीता में कहते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में कोई लक्ष्य रखेंगे तो हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम लक्ष्य को देख सकते हैं तो उसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि व्यक्ति उस लक्ष्य को देखता ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आते हैं और हमें कहते हैं कि जो आपको बाकी सब लक्ष्य अपने जीवन के बनाए रखे हैं ये सब तुच्छ है, ये वास्तविक लक्ष्य है। अगर आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो इसमें और सब लक्ष्य भी शामिल हैं। So the next reason for Chaitanya Mahaprabhu's appearance, or the next aspect of his gift to the world, is very interesting. Nija Prema Ratna Rakshana Yatno Gatatva Karpanya Dosha Durikaranaya. He comes here in this age of Kali in order to remove the fault of miserliness arising from carefully protecting his jewel of Prema. दूसरा जो कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने का, दूसरा जो पहलू है उनके उपहार देने का, वो बहुत दिलचस्प है। निज प्रेम रत्ना के चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं और ये कृपणता का दोष दूर करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये जो प्रेम का रत्न है उसकी सुरक्षा देके वो ये करते हैं। Srila Jiva Goswami explains that Prema is the most confidential and most cherished jewel of God himself, and he is very, very careful in regard to whom to give this jewel. He is not really careless. So before he was not giving this bhakti so freely. तो श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जो प्रेम है ये बहुत गुप्त है, बहुत पोषित है, ये बहुत गुप्त गहना है जो भगवान सावधान रहते हैं, ये हर किसी को नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि ये किसको देना है, वो ये बांटने के विषय में लापरवाह नहीं है। तो पहले वो ये रत्न सभी को बांट नहीं रहे थे। In Srimad Bhagavatam, Sri Sukadev Goswami says, Muktir dadati karhichit smana bhakti yoga, that Lord Krishna very easily gives mukti. If somebody comes to him and says, I want liberation, I want mukti, he will give. But he's very, very careful and stingy when it comes to giving bhakti yoga, smana bhakti yoga. तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कोई भगवान के पास आता है और मुक्ति की मांग रखता है, वो आसानी से उसे दे देते हैं, परंतु वो बहुत सावधान है और कंजूस है जब भक्ति योग देने की बारी होती है तो। Yes, he is very conjuice. That's true. So he's very stingy. He doesn't want to give bhakti because he knows if I give bhakti to somebody, then he will attain such a power that he will control even myself. So Krishna is very, very careful. He is looking at somebody and saying, no, 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 this is not fit, and this is not fit, and this is not fit. And ultimately, he doesn't give bhakti to anyone. इस मामले में कंजूस हैं, वो किसी को भी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी को भक्ति दे दी तो उसे उस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि वो भगवान को नियंत्रण करने लगेगा। तो कृष्ण बहुत सावधान है, वो देखते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको भक्ति नहीं देनी है, ये योग्य नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से अंत में वे किसी को भी भक्ति नहीं देते। Yeah, especially in this Kali-yuga, if you try to see who is qualified to get bhakti, you will not find anyone. There are 7 billion people in this world, but out of the 7 billion people, hardly anyone, nobody has any qualification to get bhakti. तो अगर हम इस कलयुग में इस जगत में देखेंगे कि कौन योग्य है भक्ति पाने के लिए, तो हमें कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर 7 बिलियन संख्या है लोगों की, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है जो योग्य होगा भक्ति पाने के लिए। So when Krishna is returning back to his spiritual world, this is Jiva Goswami is explaining, after being
in this Kali-yuga and the end of Dvapara Yuga in this earth, he's thinking, you know, I was there and I didn't give bhakti practically to anyone, and this is not good because this is fault, this is something very bad. I have to become little more generous, and therefore he comes again as Sri Chaitanya Mahaprabhu and says, okay, take it, no problem. तो श्रील जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि जब कृष्ण वापस आध्यात्मिक जगत लौट रहे हैं, कलयुग शुरू हो रहा है, द्वापर का अंत है, इस धरती पर वे अपनी लीला करके वापस लौट रहे हैं, तो कृष्ण सोचते हैं मैं जब यहाँ धरती पे था मैंने तो किसी को भक्ति नहीं दी, ये अच्छा नहीं है, ये एक दोष है, ये बुरा है, तो मुझे और अधिक उदार बनना होगा। इसलिए वे वापस आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में और कहते हैं ले लो प्रेम, कोई बात नहीं, ले लो। Srila Jiva Goswami kind of argues with himself. He says, as an opponent, as Purva Pakshi, he says, what do you mean that Krishna didn't give prema to anyone before? What about Ambarish Maharaj? What about Pandavas? What about Dhruva Maharaj? So many great devotees are listed in the scriptures who got prema from Krishna. What do you mean that he didn't give prema to anyone? जीव गोस्वामी अपने साथ ही तर्क करने लगते हैं, अपने पूर्व पक्षी ही बनकर। वे कहते हैं इसका क्या अर्थ है कि कृष्ण ने पहले किसे कभी प्रेम नहीं दिया? अमरीश महाराज हैं, पांडव हैं, ध्रुव महाराज हैं, इतने महान भक्त हैं शास्त्र में, तो ये तो नहीं है कि कृष्ण ने पहले किसी को प्रेम नहीं दिया हो। Jiva Goswami says, no. Krishna didn't give them prema. They forced him to give them prema. They more or less, unwillingly, they more or less took the prema from Krishna, not that Krishna gave them prema. तो फिर जीव गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, कृष्णा ने उन्हें प्रेम नहीं दिया, उन्होंने एक प्रकार से जबरदस्ती से कृष्ण को मजबूर किया ये प्रेम देने के लिए। कृष्ण ने स्वयं उन्हें प्रेम नहीं दिया है। He says that, for example, there is a ruler, very authoritarian ruler, and he can confiscate some wealth from some wealthy people, but it doesn't mean that they give this wealth to him. He just takes them by force. So he says, in the same way, all these devotees, by their austerities, by their insistence, by their determination, they more or less forced Krishna to give them prema. So it's still he is very conducive. He is very stingy. That they have to adopt such a violent means. Yes, please go on. तो वे कहते हैं आगे जीव गोस्वामी वे उदाहरण देते हैं कि यदि कोई बहुत ही शक्तिशाली शासक है तो वे धनी व्यक्ति से धन जब्त कर लेता है, लेकिन ये जबरदस्ती से लेता है। इसका मतलब नहीं धनी व्यक्तियों ने उसे लाकर ये धन दिया। उसी प्रकार से इन भक्तों ने जबरदस्ती से, अपने गुणों से, अपनी दृढ़ता से, कृष्ण से जबरदस्ती से ये प्रेम लिया है। कृष्ण तो अभी भी बहुत कंजूस ही हैं। Then Srila Jiva Goswami, he again, through the Purva Pakshi, he says, but is it good to give such a valuable thing to unqualified people? Because we know that even in Bhagavad Gita, Krishna, he condemns people who gives charity to unqualified people. He says it's tamasic charity. If you give to somebody who is qualified in a proper moment, then this is sattvic charity. But if you give to somebody who is unqualified, without any consideration of qualification or the time, then it's just charity in the mode of tamas. तो फिर पूर्व पक्ष में फिर श्रील जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि क्या ये अच्छा है अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को ये धन दिया जाए। भगवत गीता में स्वयं भगवान भी इस बात का खंडन करते हैं
कि जो व्यक्ति दान देते हैं अयोग्य व्यक्तियों को, वो तमोगुण में दान है। यदि कोई योग्य व्यक्ति को सही उचित समय में दान दे तो वो सात्विक दान है। तो इसी प्रकार से अगर हम बिना सही समय के, बिना सही योग्यता के किसी को दान देते हैं तो वो तमोगुण में होता है। So is it clarification of the Lord that he gives Krishna Prem which is so valuable to anyone, or it's something you're saying that he doesn't know what he is doing, you know, by giving this Krishna Prem to anyone and everyone? Is it really glorification of the Lord to say that he is giving this Krishna Prem to unqualified people? This is the question which Srila Jiva Goswami asks. तो क्या ये वाकई में भगवान की Yes, please go ahead, man. No, please. This... Okay. तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी फिर कहते हैं कि क्या ये भगवान की महिमा होगी कि वे कृष्ण प्रेम जो इतना मूल्यवान वस्तु है वो किसी को भी बांटे जा रहे हैं। वे जानते नहीं वो व्यक्ति योग्य है या नहीं, परंतु ऐसे ही सभी को दिए जा रहे हैं। तो क्या ये वास्तविक गुणगान है भगवान का, उनकी महिमा का गुणगान है? तो इस प्रकार से वो प्रश्न करके अपने साथ ही पूर्व पक्ष कर रहे हैं। And Srila Jiva Goswami answers to this question in a very beautiful way. He says, no. Normally, yes, it's not proper to give charity to unqualified people, but there is one occasion when it's allowed, when it's proper. तो फिर श्री जीव गोस्वामी इस प्रश्न का बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं। वो कहते हैं सामान्य रूप से ये उचित नहीं है किसी अयोग्य व्यक्ति को इस प्रकार बहुत ही कीमती चीज देना, परंतु एक अवसर पे ये उचित है और इसकी अनुमति दी गई है। He says when the king, after conquering the whole world, is coming back to his own kingdom with this victory, and he is so overjoyed by this victory, and he wants to share this joy of his heart with everyone. He goes through the streets of his capital, and with him there are big baskets of jewels and gold and silver and all kinds of valuable things, and he takes this with his two hands and he throws it to the crowds which are here along the streets. तो फिर श्रील जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि जब एक राजा पूरे जगत पर विजय प्राप्त करके उसे जीत के अपने राज्य में वापस लौट रहा है और वो इस जीत से इतना प्रसन्न है और ये प्रसन्नता औरों के साथ बांटना चाहता है, तो वो अपनी राजधानी के सड़कों पर निकलता है और उसके साथ टोकरी होती है गहनों की, सोने की, चांदी की, और दोनों हाथों से वो ये गहने जो सड़क पर लोग खड़े हैं उनकी ओर फेंकता जाता है। And he says not only the king himself is doing this, but all his ministers, all his associates who are also very happy, they're helping him to distribute this wealth without any discrimination, and they're going along with the kings and also throw all this wealth to the crowds. तो फिर आगे वे कहते हैं कि केवल जो राजा है वो ये नहीं कर रहा है, उसके जो और मंत्री हैं, जो और सहयोगी हैं, वे भी इतने प्रसन्न हैं कि वे भी राजा की सहायता करते हैं इस प्रकार से धन जो सड़क पे सब लोग जो भीड़ है उन्हें बांटने के लिए। And Srila Jiva Goswami very interestingly explains what does it mean that we receive the mercy of Lord Chaitanya, because sometimes people think that, when Lord Chaitanya was there 500 years back, then he was giving all this mercy to everyone, but now he's not giving because he's not there. तो आगे श्रील जीव गोस्वामी ये समझाते हैं बहुत दिलचस्पी से कि इसका अर्थ क्या है कि किसी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है। तो बहुत समय ऐसा देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जब भगवान चैतन्य यहाँ पर थे वे सभी को अपनी कृपा दे रहे थे, परंतु अब हमें उनकी कृपा नहीं मिल रही क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं है। He says, no, it's not true, because this victory journey of the king is still going on, and Sri Chaitanya Mahaprabhu is still throwing this wealth
all over the place to everyone. तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। तो ये जो राजा अपनी जीत मना रहे हैं, उनकी जीत मनाने की यात्रा अभी तक चल रही है। अभी तक वो जो कीमती गहने हैं वे हर स्थान पर सभी की ओर फेंक रहे हैं। He says that somebody who gets a gold coin or silver coin, it means that he gets bhakti in the form of sadhana. Somebody who gets a jewel from Sri Caitanya Mahaprabhu, he gets bhakti in the form of bhava. And those rare souls who get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu in the form of Prema Bhakti, they get Chintamani, which is also there in the basket. But naturally, Chintamani jewels are a little more rare than normal jewels, and these normal jewels are even also more rare than golden coins. But even if we get bhakti in the form of sadhana, that's also a great fortune. That's also a gift of Lord Chaitanya. So don't say that you didn't get anything from Lord Chaitanya. You got a golden coin. You can do sadhana bhakti, which is actually not different from bhava bhakti and prema bhakti. It's just the initial stage of the same bhakti. तो आगे वे कहते हैं कि अगर किसी को उस वो जो राजा चल रहा है और अपनी टोकरी से बांट रहा है, अगर किसी को सोने या चांदी का सिक्का मिला तो इसका अर्थ है उसे वो उपहार मिला है साधना के रूप में। और किसी और को कुछ और जेवर मिलते हैं, उनको मिलता है कोई और रत्न, उनको जैसे भाव मिला है। और बहुत ही दुर्लभ है अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है प्रेम भक्ति के माध्यम से, तो उनको चिंतामणि मिला है उस टोकरी से। तो ये स्वाभाविक की बात है कि चिंतामणि सबसे दुर्लभ है, उससे अधिक दुर्लभ है जो सामान्य रत्न और उस टोकरी में है, और उससे कम दुर्लभ है जो सोने और चांदी के सिक्के। तो अगर हमें साधना भक्ति भी प्राप्त हुई है तो ये बहुत भाग्य की बात है, ये बहुत भाग्य से हमें ये उपहार मिला है। तो ऐसा मत कहिए कि आपको चैतन्य महाप्रभु से कुछ नहीं मिला है। हमको ये सोने का सिक्का मिला है साधना के रूप में, और ये साधना भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति से अभिन्न नहीं है, केवल ये भाव और प्रेम भक्ति की शुरुआत की अवस्था है। So we're also there in the crowds of this victory journey of great King Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we got some very valuable gift of sadhana bhakti. So we got some golden coin from his heart. तो हम भी उस भीड़ में खड़े हुए हैं जो ये राजा अपनी जीत की यात्रा कर रहा है। हम भी उस भीड़ में हैं, और बहुत ही महान राजा है श्री चैतन्य महाप्रभु। हमको भी उनसे एक बहुत कीमती उपहार प्राप्त हुआ है इस साधना भक्ति के रूप में। हमें ये सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है चैतन्य महाप्रभु के हृदय से। So many people, they completely changed their life, and I very often get the letters from people who thank Srila Prabhupada, thank Sri Chaitanya Mahaprabhu, that their life has become thousands, if not millions of times better before they met with the devotees. They say that it's just no comparison between the life which they led before and the life which they're leading now. So that's the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's the purpose why Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Kali-yuga. And if he wouldn't come to this Kali-yuga, nobody would have chance to be in touch with this amazing gift of sadhana bhakti even. तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से उनकी जीवन में पूरा बदलाव आ जाता है। और काफी बार महाराज को पत्र आते हैं जहां पर भक्त धन्यवाद कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी का, धन्यवाद कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, कि उनका जीवन में कितना बदलाव आ गया है, उनका जीवन करोड़ों करोड़ों गुना और बेहतर हो गया है
उस जीवन से जो भक्ति के पहले उनके पास था। इन दोनों जीवनों में कोई तुलना ही नहीं है। तो जो अब उनका जीवन है, वो जो बदलाव आया है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। अगर वे यहाँ नहीं आते तो किसी को ये साधना भक्ति के उपहार से संपर्क में आने का मौका नहीं मिलता। So that's the second reason why Sri Chaitanya Mahaprabhu came. First reason is to give something which is unachievable and to give us this goal. Second reason is to somehow or other to compensate for his fault of miserliness. And the third reason is very, very important, extremely important for us to understand what Sri Chaitanya Mahaprabhu is given. It is said, Taddani tadasvadanam tattva prakashanaya, to show to the people of this world very important truths, tattva prakashanaya, that you can only taste love if you give this love to others. There is no other way to taste or to achieve the taste of love if you're not giving it to others. प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो कारण जो हमने देखे चैतन्य महाप्रभु के आने के। पहला है वो हमें वो वस्तु देना चाहते थे जो अप्राप्य थी पहले, और दूसरा कारण है कि भगवान हमें जो उन्हें लगा था कि उन्होंने जो कंजूसी की है उसके लिए हमें वापस पूर्ति करने के लिए वे आए। और जो तीसरा कारण है ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए वो इस जगत के लोगों को जो महत्वपूर्ण तत्व है, तत्व प्रकाशन आया, वो देने के लिए आए। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें इस प्रेम का आस्वादन करना है तो वो तभी संभव होगा जब हम ये प्रेम दूसरों को बांटेंगे। इस प्रेम को आस्वादन करने के लिए और कोई तरीका नहीं है अन्यथा इसे दूसरों को बांटना। Srila Jiva Goswami says that let's say somebody is cooking a very nice feast, and after cooking this very nice feast, he sits and eats this feast alone. Will he have a taste of this feast or not? He gives another example. If somebody is cooking a very big feast and he invites everyone and he gives this feast to others, then he enjoys, everyone else enjoys, and he says that this is the only way to enjoy this amazing meal of love, just by giving it to others. तो श्रील जीवा गोस्वामी यहाँ पर एक उदाहरण बताते हैं कि सोच लीजिए किसी ने बहुत अच्छी दावत के लिए पकाया है और वो बाद में अकेले बैठ के उस दावत के अन्य व्यंजनों को खाता है, तो क्या उसे स्वाद आएगा उस खाने का? नहीं। लेकिन परंतु दूसरे उदाहरण में अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार की दावत पकाए और औरों को भी आमंत्रित करे और औरों को भी खिलाए, तो वो खुद भी आनंद प्राप्त करता है, दूसरे भी आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से इस कृष्ण प्रेम का जो अद्भुत जो दावत है, अगर हमें इसका आनंद उठाना है तो हमें ये दावत दूसरों को भी बांटनी होगी। So Srila Jiva Goswami says, then when Sri Chaitanya Mahaprabhu came, he invited everyone to share to this feast of love. Srila Prabhupada, when he came to America, he made this tradition, Feast of Love, or Love Feast on Sundays. So that's originally is coming from Chaitanya Mahaprabhu. And what does it mean, Feast of Love? You invite everyone. You invite, any passerbys, please come, please take part in it. And this is the way to enjoy love. And the one who is enjoying the most is the one who is giving the most. तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सभी को आमंत्रित किया इस दावत में आके भाग लेने के लिए, इस प्रेम की जो दावत है। तो श्रीला प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए तो उन्होंने भी ये परंपरा वहां शुरू की, जो रविवार के दिन वो कहते थे ये प्यार का त्योहार,
फीस्ट ऑफ लव। तो ये चैतन्य महाप्रभु से ही आ रहा है। तो ये प्यार का त्योहार क्या है? इसमें सभी को आमंत्रित कीजिए। कोई भी राहगीर व्यक्ति जो चल रहा है उसको बोलिए कृपया आइए, आके यहाँ पर इस त्योहार में भाग लीजिए। तो यही तरीका है, हम खुद इस त्योहार का आनंद उठाएं, दूसरों को इसे देने के माध्यम से। और इसका आनंद सबसे अधिक वो उठा पाएगा जो सबसे अधिक दूसरों को ये देगा। So the fourth reason which Sri Jiva Goswami explains by explaining this verse, Anarpita Charit Chiram, what Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving, which was not given before. The fourth reason is very, very important. He says, Preyasi Mahabhava Swarupa Shri Radhika Tattva Gyanapaya. He says, he comes here to this world to make known the nature of his preyasi, his beloved Shri Radhika, who is the very form of Mahabhava. He is, in other words, he is explaining the nature of Srimati Radharani, which was not known to anyone before Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जो चौथा कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने का, श्री जीव गोस्वामी उसकी व्याख्या करते हैं ये अनर्पितो चरितचिराम इस श्लोक से, कि वो कहते हैं कि वो क्या वस्तु है जो पहले नहीं बांटी गई थी, पहले नहीं दी गई थी। तो वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं इस जगत में सबको उनकी प्रिय श्री राधिका के बारे में अवगत कराने के लिए, उनके भाव के बारे में अवगत कराने के लिए, जो स्वयं महाभाव का प्रतिबिंब है। तो वो उनके भाव के बारे में सभी को अवगत कराने के लिए आते हैं, और उनके भाव के बारे में किसी को चैतन्य महाप्रभु के यहाँ के आने के पहले नहीं पता था। Even Krishna, that Krishna is the Swayam Bhagavan, is a very confidential truth. We know that practically nobody knew this before Chaitanya Mahaprabhu. There were so many devotees who were worshipping Lord Vishnu, Lord Narayana, and they were thinking that Krishna is just one avatar of Lord Vishnu or Lord Narayana. It's Sri Chaitanya Mahaprabhu who came and who pointed out this very beautiful verse from Srimad Bhagavatam, Krishna Stu Bhagavan Swayam, Ati Chamsha Kalah Pumsah, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Very clear verse. So even this was not known before Sri Chaitanya Mahaprabhu. What to speak about the nature of Srimati Radharani, what to speak about the nature of her love. Who is she? तो यहाँ पर फिर कहा जा रहा है, महाराज जी बता रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। ये बात भी बहुत गोपनीय तत्व है। ये भी हम देखते हैं कि पहले किसी को ये बात नहीं पता थी। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने के पहले बहुत भक्त थे जो विष्णु की, नारायण की उपासना करते थे, परंतु वे ये सोचते थे कि कृष्ण भी नारायण और विष्णु का ही एक अवतार है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्रीमद् भागवतम के इस बहुत सुंदर श्लोक से अवगत कराया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इससे ये बात स्पष्ट कर दी। चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले ये किसी को पता नहीं थी। ये पता नहीं थी श्रीमती राधा रानी के भाव के बारे में, तो कुछ भी नहीं पता था। उनके प्रेम के बारे में, वो कौन है, ये भी बातें नहीं पता थी। It's really amazing if we think about it, that how such a confidential truth, which is not known to anyone, still not known, still hardly known to the traditional people, is given so freely to mlechas and yavanas. And here I am, born in Russia, speaking about Mahabhava Swarupa Srimati Radharani to you. Isn't it amazing? This is the proof that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful avatar that ever was there. ये महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कितना अद्भुत है अगर हम इस विषय में सोचेंगे
कि इतनी गोपनीय सत्य की बातें जो किसी को पहले पता नहीं थी, जो पारंपरिक व्यक्तियों को ये बातें नहीं पता थी, अब वो बहुत आसानी से म्लेच्छ और यवनों के बीच में सभी को पता है। महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं हूँ जो मेरा जन्म रूस में हुआ था, और आज मैं आप सबके बीच में महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी के विषय में कथा कर रहा हूँ। क्या ये अद्भुत नहीं है? ये इस बात का प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु अवतार हैं, और उनकी तरह कृपालु कोई और अवतार नहीं हुआ है। So this is the fourth reason of Sri Chaitanya Mahaprabhu to appear. He wanted to reveal the extent of Srimati Radharani's love, and at the same time he wanted to reveal this Vrindavan Dham. We all know that Sri Chaitanya Mahaprabhu, one of his missions was to re-establish the glory of Sri Vrindavan Dham, because this is the only Dham where the love rules supreme. तो जो चौथा कारण है वो है श्रीमती राधा रानी की प्रेम का हद समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम को हमारे बीच में प्रकट किया। तो ये एक और लक्ष्य था श्री चैतन्य महाप्रभु का कि वो पुनर्स्थापित करना चाहते थे वृंदावन धाम की महिमा, जहां पर प्रेम सबसे सर्वोच्च है। He is explaining, not explaining, he is showing by his own example this amazing manifestation of the love of Srimati Radharani, that there is nothing higher than this. He came not just to give the theory, he is showing in a very practical way how even little drop of this love can completely overwhelm a human being and completely drown someone in this ocean of bliss. तो वे फिर आगे हमें दिखा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना अद्भुत प्रेम का प्रसार है श्रीमती राधा रानी जी का, उनकी अभिव्यक्ति। तो ये हमें श्रद्धा नहीं, साथ में हमें श्रद्धा दे रहे हैं, केवल सिद्धांत नहीं, हमें एक व्यक्तिगत रूप से समझा रहे हैं कि श्रीमती राधिका के प्रेम की एक बूंद हमें एक सागर में आनंद के डुबा सकती है। And then the fifth reason, and I think that will be the last in our little description of this verse. There are 10 reasons altogether, but the fifth reason is also very important. Tat prema mahima tattva tat asvadaya. To taste, he comes himself, and the previous reasons were for everyone else. But okay. Sorry for the interruption. Please continue. Yes. But in the fifth reason, he says, he comes here, tat prema mahima tattva tat asvadaya. He comes himself to taste this greatness of her love. Tat prema mahima tattva tat asvadaya. तो जो अभी हम पांचवा कारण देखेंगे, और शायद ये आखिरी कारण होगा आज हमारी कथा में, हम ये पांचवा कारण देखेंगे क्यों चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। तो 10 कारण है कुल मिलाकर, जैसे मैंने पहले कहा, परंतु ये पांचवा कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम का आस्वादन स्वयं करने आए। इसके पहले जो कारण हमने देखे वो औरों के लिए थे, लेकिन ये जो पांचवा कारण है, इस कृष्ण प्रेम की महानता का आस्वादन करने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए। Srila Jiva Goswami, he explains that this is the reason why Sri Chaitanya Mahaprabhu is called in this verse Hari. Hari means somebody who takes away, somebody who steals. So Chaitanya Mahaprabhu, he gives. He is our Audari avatar, he is coming to give, but why he is called Hari?
it is very clear why Krishna is called Hari. He was always stealing something, either yogurt or butter or clothes or hearts. But Sri Chaitanya Mahaprabhu comes to give. Why he is still called Hari in this verse? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये कारण है कि क्यों इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि कहकर अवगत किया जाता है। हरि शब्द का अर्थ है जो हमसे छीन ले, जो हमसे चोरी कर लेता है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो हमें देने आए हैं, वे तो औदार्य अवतार हैं, वो यहाँ पर आए हैं देने के लिए। कृष्ण को हरि कहा जाए ये समझा जाता है क्योंकि कृष्ण कभी दही चुरा लेते हैं, कभी मक्खन चुरा लेते हैं, कभी वस्त्र चुरा लेते हैं, कभी हमारे हृदय चुरा लेते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ हमें देने आए हैं, तो उनको क्यों हरि कहा जा रहा है? And Srila Jiva Goswami explains that he's called Hari in this verse because he's also a thief. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is stealing Radha Bhava, he is stealing Radha's love to enjoy it and to show how the taste of this love is the greatest taste in this world. तो श्रील जीव गोस्वामी हमें समझाते हैं कि इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को भी हरि कहा जा रहा है क्योंकि वे भी एक चोर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव चुरा रहे हैं, राधा का प्रेम चुरा रहे हैं, उसका आस्वादन करने के लिए और यहाँ पर इस जगत में दिखाने के लिए कि सबसे महान रस यही है इस जगत में। Srila Jiva Goswami, this will be the last thing which I will explain. He explains in this commentary the confidential meaning why Sri Chaitanya Mahaprabhu appears during lunar eclipse, during Chandra Grahana. तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ समझाते हैं, ये आखिरी वर्णन होगा जो मैं आज आपके बीच में कर रहा हूँ। तो वो इस टीका में समझाते हैं वो गोपनीय अर्थ या गोपनीय कारण कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव चंद्र ग्रहण के समय होता है। He says that what's happening during lunar eclipse. During lunar eclipse, this beautiful moon, the effulgence of the beautiful moon is being eclipsed by this black planet of Rahu. So he says that what is going on, please listen very carefully, it's very interesting. Yato harati svabhava kanti vilasah Shri Krishnasya chittam iha punar varna dehadikam hritva svasvabhavam tam karoti yasa radha iti artha. He says that Radha steals Krishna's heart by her gestures, complexion and nature. After taking away his complexion and body, she makes him adopt her own nature. That is Radha. Therefore, she is called in Hare Krishna mantra Hara. She is stealing. She is stealing by her gestures, her complexion and her nature. He takes away complexion and body of Krishna. And in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, even though he is Krishna himself, he takes the complexion and even the appearance of Srimati Radharani. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है। तो जो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत चांद है, जो उनकी प्रभा है, वो ढक जी जाती है इस काले ग्रह राहु द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ही रोचक बात समझाई जा रही है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण का हृदय चुरा लेती है अपने इशारों से, अपने रंग से, अपने स्वभाव से, और जब वे उनका रंग और शरीर चुरा लेती हैं तो जो अपना स्वभाव है वो उनको दे देती हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी को हरे कृष्ण महामंत्र में हरा कहा जाता है कि जो अपने इशारों, अपने रंग, अपने स्वभाव द्वारा कृष्ण का रंग, कृष्ण का शरीर चुरा लेती हैं। और इसलिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं
जो स्वयं कृष्ण है, फिर भी उनका जो रंग और रूप है वो श्रीमती राधा रानी की तरह है. Krishna means the one who attracts, so one who really gets something. So Krishna, he comes to Srimati Radhika and he attracts her own bhava, her own effulgence, and in this way takes it upon his own nature and becomes Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore he is called Hari. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कृष्ण है उसका उनका अर्थ है जो सर्व आकर्षणीय, जो दूसरों को आकर्षित करता है, जो दूसरों से कुछ ले लेता है. तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पास आते हैं और उनके भाव को आकर्षित करते हैं, उनके स्वभाव को आकर्षित करते हैं, उनके तेज को आकर्षित करते हैं और वो श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि कहा जाता है. So that's Sri Chaitanya Mahaprabhu avatar. He comes with this feeling of Srimati Radharani, and he enjoys this feeling of Srimati Radharani, this amazing love of Srimati Radharani, by giving it to others without any discrimination. Though that's the meaning of Sri Chaitanya avatar, which we are about to celebrate within 1 week or so. So we should again and again meditate on this verse, Anarpita Charim Chirat, to really try to understand the extent of our fortune. And of course, Srila Prabhupada, as the general of the army of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to give it to us. And because of his mercy, we are able to speak about this and we are able to celebrate this festival of love. And the whole ISKCON movement is basically a big celebration of this appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We celebrate his appearance day once a year, but actually every day while we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we're celebrating his appearance in our lives. तो यहाँ पर महाराज जी आगे बता रहे हैं कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं वो श्रीमती राधा रानी का भाव ले लेते हैं और इस भाव का आनंद लेते हैं. ये जो बहुत अद्भुत प्रेम है श्रीमती राधा रानी का, इसका आनंद वो लेते हैं, इसे दूसरों को बांट के, बिना कोई भेदभाव से वे इसे दूसरों को बांटते हैं. और ये है चैतन्य महाप्रभु अवतार, जिनके आविर्भाव को हम लगभग 1 हफ्ते बाद मनाने वाले हैं. तो हमें बार बार इस श्लोक पर ध्यान करना चाहिए. ये जो श्लोक है अनार्पितो चरिम चिरात, और बेशक ही जो शिला प्रभुपाद जी हैं वो भी हमारे इस हरे कृष्ण सेना के एक नेता ही हैं और वे भी हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा देने आए हैं. तो हम इस बात को समझना चाहिए और हम इस प्रेम के त्योहार को फिर मना सकते हैं. तो ये जो पूरा हरे कृष्ण आंदोलन है, ये पूरा आंदोलन ही एक बड़ा महोत्सव है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का. हम बेशक श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव वर्ष में 1 दिन मनाते हैं, परंतु इसे हम प्रतिदिन मनाते हैं. जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को अपने जीवन में हर क्षण मनाते हैं. Thank you very much. You're a wonderful translator. You're translating everything so exactly. Thank you very much. I guess our time is over. And thank you very, very much. And the topic was so apt and the shloka was so beautiful. And, I think we want to have one more session to cover the other 4 aspects. But then, this thing that you gave us, each one looked one better than the other. So thank you very, very much for your presence. There are some questions. Before that, Nand Kishore, you want to quickly translate? तो प्रभु जी ने ये कहा कि आज का विषय बहुत ही अद्भुत था और हम भविष्य में चाहेंगे कि इस विषय पर महाराज आके और विस्तार में कथा करेंगे. So, Maharaj, there are a few questions in the chat box, and I would like to just ask you a few. In Kali-yuga, effective preaching should be Chaitanya Mahaprabhu centric
or Krishna centric? तो ये प्रश्न है या महाराज से प्रश्न है कि कलयुग में जो हमारा प्रचार होता है क्या उसे कृष्ण केंद्रित प्रचार होना चाहिए या श्री चैतन्य महाप्रभु केंद्रित होना चाहिए? We're preaching the glory of Krishna and the glory of Srimad Bhagavatam, but at the same time, we have to make it very, very clear that to understand Krishna, one first have to develop a very strong service mood towards Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise, if you try to understand Krishna, like oftentimes Prakriti Sahajiyas, they are speaking about Krishna, only about Krishna, kind of forgetting Sri Chaitanya Mahaprabhu. But to get access to the moods of Vrindavan, to the moods of Krishna, to the moods of Sri Chaitanya, of Srimati Radharani, one first has to approach through Sri Chaitanya Mahaprabhu, through the service mood to the mission of Chaitanya Mahaprabhu by trying to serve his preaching mission. And by the means of preaching the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we will be able to understand Krishna. Otherwise, there is no possibility to understand Krishna. Krishna will remain very remote from us. तो महाराज यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि जब हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत का भी महिमा का प्रचार करना है और उसके साथ साथ ये भी बहुत स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि कृष्ण को समझने के लिए पहले हमें बहुत ही अच्छा सेवा भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए इसको विकसित करना होगा। अगर हम केवल सीधे ही श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं होगा। जैसे सहज्या कवि करते हैं, वे कृष्ण के विषय में बात करते हैं परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते हैं। परंतु अगर हमें संपर्क करना है वृंदावन भाव से, श्रीमती राधा रानी का क्या भाव है ये समझना है, तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से जाना होगा, जिसका अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए सेवा भाव पहले प्रकट करना होगा, उनके इस प्रचार आंदोलन में सेवा करना होगा, उनकी महिमा का गुणगान करना होगा, तब हम कृष्ण को समझ पाएंगे। वरना कृष्ण को समझ पाना हमसे एक बहुत दूर की वस्तु ही रह जाएगी। So we are trying to give people Krishna, but we also know that the only way for people to get Krishna is through Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, it's not either or. We are Krishna-centered for sure, but Sri Chaitanya Mahaprabhu, being non-different from Krishna, is our greatest aid to understand Krishna. And there is no other way to understand Krishna outside of Chaitanya Mahaprabhu and his mission. तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि हम बेशक लोगों को कृष्ण देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमको ये भी जानना होगा हम लोगों को कृष्ण केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से दे सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। हम बेशक कृष्ण केंद्रित हैं, परंतु जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कृष्ण से अभिन्न है, वो हमारी सबसे बड़ी सहायता करेंगे कृष्ण के विषय में समझने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके लक्ष्य के बाहर कृष्ण को समझना संभव नहीं है। So Maharaj, just a follow-up question from me that is associated with this is, there are so many who worship Krishna from the other sampradayas, and can we also say that that is okay, and they will also eventually come to the point of understanding in the mood of Lord Chaitanya if we give them the opportunity? How should we tackle those who are from the other sampradayas also here? तो श्री वल्लभ प्रभु जी कह रहे हैं इसी प्रश्न से संबंधित मेरा आगे एक और प्रश्न है उन व्यक्तियों के लिए जो भी कृष्ण की सेवा करते हैं परंतु दूसरे संप्रदायों से हैं। तो
तो क्या ये सही है? क्या हम समझे कि वे भी आगे चल के श्री चैतन्य महाप्रभु की भावना से ही कृष्ण को समझने की स्थिति में आएंगे? तो इस प्रकार के व्यक्तियों से कैसे हम निपटेंगे? There are so many Krishnas. Krishna is not one. There is Krishna in Dwaraka, there is Krishna in Mathura, there is Krishna in Vrindavan, and even in Vrindavan there are different Krishnas. So people, they definitely worship Krishna, but it's not so clear which Krishna they worship. They may be worshipping different Krishna, like sometimes people worship Krishna who is married with Srimati Radharani. And definitely there is Krishna who is married with Srimati Radharani. It's described in Brahma Vaivarta Purana, their marriage, that, Chaturmukha Brahma was the priest and everything else. So they're also worshipping Krishna, but it's a different Krishna whom they worship than the Krishna who is the Ishta Devata which Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give to us. महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत प्रकार के कृष्ण हैं, केवल एक कृष्ण नहीं है। द्वारका में कृष्ण है, मथुरा में कृष्ण है, वृंदावन में कृष्ण है, तो वृंदावन में भी अन्य कृष्ण है। तो व्यक्ति कृष्ण की उपासना करते हैं, परंतु ये स्पष्ट नहीं है कि किस कृष्ण की वे उपासना कर रहे हैं। तो वो हमारे कृष्ण से भिन्न हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण की उपासना करते हैं जिनका विवाह श्रीमती राधा रानी के साथ हुआ है, और इसका वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में है, और ये भी बताया गया है कि चतुर्मुख ब्रह्मा उन्हें उनका विवाह करवाया था। तो वे भी कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, पर वो उस कृष्ण से भिन्न है जो इष्ट देव के रूप में चैतन्य महाप्रभु जिनको हमें देने आए। In the beginning, it's very good, in the beginning stages, it's very good. We just worship Krishna and we're not very clear which Krishna we worship. We just worship Krishna. But when we advance further and further, when we go this narrow path of spiritual life, following Sri Chaitanya Mahaprabhu, we will understand that ultimately this path which Sri Chaitanya Mahaprabhu has given is bringing us to this kunjas of Vrindavan, where there is Parakiya Rasa is going on the banks of river Yamuna. So, and it's different. We respect other people who worship Krishna. We are very happy that people worship Krishna. But at the same time, we as followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu want to achieve a specific form of Krishna which is not achievable anywhere else. तो यहाँ पर महाराज आगे बता रहे हैं कि शुरुआत में ये अच्छा है कि हम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि वो कौन सा कृष्ण है। वो इतना स्पष्ट नहीं है, हम केवल कृष्ण की उपासना करते जाते हैं। परंतु जैसे आगे आगे बढ़ते हमारी प्रगति होगी, जब हम इस संकर पाथ रास्ते से चलेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो हम अंततः ये समझ पाएंगे कि ये जो रास्ता है श्री चैतन्य महाप्रभु का, ये हमें वृंदावन के कुंज में ले जा रहा है, यमुना नदी के तट पर जहाँ परकीय रस स्थित है। तो ये बाकी जो व्यक्ति कृष्ण की उपासना करते हैं उससे भिन्न है। तो हम प्रसन्न हैं कि दूसरे व्यक्ति भी कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ हम जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो एक विशेष कृष्ण रूप की प्राप्ति करना चाहते हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। So, Srivallabha Prabhu said that whether other people who follow this path of Krishna ultimately will come to this concept of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's possible, but the different phenomenon is also possible. Sometimes people follow Sri Chaitanya Mahaprabhu initially, but then they realize that, this is too high what he is giving, and it's better to go somewhere in a safer place with some other sampradaya. I've seen this phenomenon also.
People start as Chaitanya Mahaprabhu's followers and they go somewhere else without being able to appreciate the beauty of this concept which Sri Chaitanya Mahaprabhu gave. तो आगे महाराज कह रहे हैं कि श्री वल्लभ प्रभु जी ने कहा था कि क्या ये ऐसा होता है कि जो दूसरे संप्रदाय में कृष्ण की उपासना कर रहे हैं वो अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व विचार में आ जाएं। तो महाराज ने कहा कभी कभी ये ऐसा होता है, लेकिन मैंने इसके विपरीत घटनाएं भी देखी हैं कि लोग शुरुआत में श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ते हैं, उनके जो बताई गई बातें हैं उनका पालन करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये तो बहुत ऊंचा है हमारे लिए तो अच्छा होगा हम कोई और सावधान स्थान में चले जाएं, और वे दूसरी संप्रदायों से जुड़ जाते हैं। वो शुरू जरूर होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनकर, परंतु फिर बाद में वे कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वे इस बात की सराहना नहीं कर सकते ये जो बहुत खूबसूरत तत्व विचार जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। Even Srila Rupa Goswami explains that if somebody follows this path of Sri Chaitanya Mahaprabhu but he commits offenses, then the degree of intimacy of relationship with the Supreme Lord may become less and less and less depending on the gravity of offenses. And he will take shelter in some other more remote relationship with the Supreme Lord, which is given in other sampradayas and in other schools. तो आगे श्री रूपा गोस्वामी हमें ये बात समझाते हैं कि अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए गए मार्ग पर चलता है लेकिन वो कोई अपराध करने लगता है तो फिर उनका जो संबंध है भगवान के साथ, जो उनकी गहराई है उस संबंध का, वो धीरे धीरे और कम होने लग जाती है। उनके अपराध कितने गंभीर है उसके हिसाब से, और फिर वो भगवान से कोई दूरस्थ संबंध बनाने लगता है जो उसे दूसरे संप्रदायों में प्राप्त होता है। Maharaj, there is one question that's associated. I'm just simplifying the question, but say, will those who are also going through the other path, will they also get perfections? But they will possibly get some level of perfection, but will not achieve the full level of prema. तो आगे एक और प्रश्न है कि महाराज जी जो दूसरे मार्गों पे चल रहे हैं क्या वे भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करेंगे, या ऐसा होगा कि वो प्रेम के पूरे स्तर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे? Yeah, there are different grades of perfection, and definitely if people very sincerely and honestly follow the path which is described by other teachers, they will achieve some level of perfection, but not necessarily the highest level of perfection. But definitely the spiritual world is a very big place. There is place for everyone with different bhavas. If you become pure, then you will have your place in the spiritual world. But there is a very unique destination which Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give to us. And that's very rare. Anarpita charim chirat karunaivatirna kalo. Samarpaita unattainable rasam svabhakti shriyam. This glowing, very effulgent svabhakti shriyam, love towards himself, which is shriyam, which is very effulgent, which is great wealth. So he came to give this great wealth, and we can inherit this great wealth, but others, they also achieve perfection, no doubt about it. What kind of perfection, that remains to be seen, and we should be humble. We should not be looking down to other people and saying you are wrong or this or that. They're achieving perfection if they're honest. But we are following our path because Sri Chaitanya Mahaprabhu gave us this atyanta agati gati, amazingly
unachievable goal which he made achievable to us. तो यहाँ पर महाराज आगे कह रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वे भी जरूर कुछ न कुछ प्रकार की कुछ सिद्धि तो प्राप्त करेंगे ही, अगर वो उसे ईमानदारी से दूसरे पथों पर चल रहे हैं जो दूसरे आध्यात्मिक शिक्षकों ने बताया है। कुछ न कुछ तरीके की सिद्धि उन्हें जरूर प्राप्त होगी, परंतु ये सबसे उत्तम नहीं होगी। आध्यात्मिक जगत बहुत ही विशाल स्थान है, वहां सबके लिए कोई ना कोई जगह है, अलग अलग भावों में व्यक्ति है, सभी के लिए जगह है। अगर आप शुद्ध होंगे तो आपको जरूर वहां एक स्थान प्राप्त होगा, परंतु वो स्थान वो अद्वितीय गंतव्य नहीं होगा शायद जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ है, वो बहुत दीप्तिमान है। स्वभक्ति श्रियम, जो अपने प्रति प्रेम है, श्रियम बहुत दीप्तिमान है। ये सबसे बड़ा धन है जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। हम इस धन को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार की सिद्धि वे प्राप्त करेंगे ये हमें देखना होगा। परंतु एक बात तो है कि हमें विनम्र रहना होगा, हमें इन दूसरे लोगों को नीचे नहीं देखना चाहिए कि ये हमसे कम हैं। अगर वे भी ईमानदार हैं तो वे भी किसी प्रकार की सिद्धि जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु जो श्री चैतन्य महाप्रभु का पथ है ये थोड़ा अलग है, अत्यंत अगति गति। वो हमें वे चीज देने आए हैं जो पहले अप्राप्य थी, वो हमें वो प्राप्त कराने आए हैं। Maharaj, if I can just take another few minutes for just one last question. Okay. And this is from Govindananda Prabhu. Hare Krishna Maharaj, material conditioning is so strong that when sincerely we try to surpass material conditions, it's more rebelling, and it sometimes feel that we are not doing justice to both practice, material and spiritual life. So how to tackle this situation and where to draw the line to justify? तो यहाँ पर श्री गोविंदानंद प्रभु जी से ये प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है श्री वल्लभ प्रभु जी ने कहा। तो गोविंदानंद प्रभु कह रहे हैं कि कभी हमारे भौतिक बंधन इतने प्रकार से गंभीर हैं कि अगर हम आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहें तो ये विद्रोह करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, भौतिक जीवन के प्रति भी न्याय नहीं हो रहा है और आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी न्याय नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? Well, Patita Pavana Hetu Tava Avataram Osamo Patita Prabhu Napai Biara. So you came to save the most fallen, and I am the most fallen. Please help me the first. This is what Narottam Das Thakur says. When we really look inside, we see that we are very fallen. There is no doubt about it. But it should be the incentive for us, the impetus to become hopeful, because since we are fallen, so we have a claim here. We have some right. I'm fallen, so please take me into consideration. Ultimately, yes, you're right. Our material conditioning is very, very deep. There is no doubt about it. But still, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is even deeper. So he can uproot our deep conditioning by his mercy. The only thing which we should do is try to serve, somehow or other to serve Srila Prabhupada, to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. And by this service mood, ultimately we will be able to overcome, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, all our material problems. तो महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं। महाराज ने ये शुरू में कहा कि ये जो गीत है, पतित पावन है तू तवा अवतारा, मोसमा पतित प्रभु पाए बेनारा, कि आप मोसमा पतित प्रभु न पाए बेआरा। तो महाराज ने यहाँ कहा कि चैतन्य महाप्रभु सभी पतितों का उद्धार करने आए हैं, उनकी रक्षा करने आए हैं, उन्हें बचाने आए हैं। तो मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, तो कृपया पहले मेरी मदद कीजिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं।
तो जब हम अपने अंदर देखेंगे तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमें पता पड़ेगा हम बहुत गिरे हुए हैं, परंतु ये हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए, ये प्रोत्साहन होना चाहिए कि हमारी सहायता करेंगे भगवान, क्योंकि हम गिरे हुए हैं। तो क्योंकि हम गिरे हुए हैं तो हमें भगवान सहायता करेंगे और भगवान हमारी ओर देखेंगे। बेशक जो हमारी भौतिक बद्ध स्थिति है ये बहुत गहरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इससे भी अधिक गहरी है। तो वो अपनी कृपा द्वारा हमारे भौतिक जो बंधन है उसे खींच निकाल सकते हैं। कैसे न कैसे हमें सेवा करने का प्रयास करना होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा, श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा, और ऐसे करते करते हम हर भौतिक समस्या से बाहर निकल आ पाएंगे, भौतिक बंधन से निकल आ पाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Goswami Maharaj